So the panel asked me why not four. So this was a very tricky question at that point of time. But again, I don't see it as a question that why not four with a question mark. Rather, it as a statement why not four with an exclamation mark. What is not in your resume? Also, it was also a question. Yeah. So one of out of the box question which I had was कि they asked for my what was your role, but the catch was you have a 5-year-old child in front of you. You have to explain your role to that child because. Hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. Today I am here in 4 Institute of Management और आज हम बात करने वाले इन स्टूडेंट्स के साथ इनका हाईएस्ट पैकेज 70 लाख जा रहा है भाई और एवरेज पैकेज 16 लाख के आसपास जा रहा है. Some of these guys have already been placed, बाकी लोग प्लेसमेंट के अंदर जा रहे हैं. बट ये आपको आज हैक्स बताएंगे. जो लोग इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हो 4 का या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो या इंटरव्यू दे चुके हो, मुझे पक्का कमेंट करके बताएगा कब है तुम्हारा इंटरव्यू और जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करना. विल शेयर हैक्स विद यू. हाय एवरीवन, वेलकम यार. वेलकम. क्या हाल है? All good? All good. How are you? All good. All good. ये तो हमारी स्टूडेंट है पुरानी वाली, इससे तो हमने फोन पे बात भी की थी. When she converted the college as well. और भाई, how's life? Nitya, having fun here? Yes, absolutely. बढ़िया. A quick small introduction. What's your name? Where are you placed? Okay. And which part of इनके बहुत सारे प्रोग्राम बड़ा कंफ्यूजिंग है इनका. 720 बच्चे पढ़ते हैं. पीजीडीएम न्यू दिल्ली भी और गुड़गांव कैंपस भी है. गुड़गांव कैंपस के अंदर पीजीडीएम और पीजीडीएम बीडीए की नियरली 120 सीट्स हैं, है ना? Yeah, 120 सीट्स हैं. और यहाँ पे तो बहुत कुछ है. एफएमबी है, आईबी भी है, कोर प्रोग्राम भी है. ये कोर भी क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन करूंगा थोड़ी देर के बाद. तो लेट्स गो यार. हाँ, व्हाट्स योर नेम एंड प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट मोर. Good evening, sir. My name is Shubham Prakash. I'm a second year student at 4 with PGDM core, and I got placed into ITC in a area sales manager role. इसको क्वेश्चन पूछा था क्या, वो सिगरेट पूछा था ना? हाँ, cigarette का एक estimate पीते हो कि नहीं ये पूछ रहा है. Cigarette पीते हो नहीं, and then second question was कि how many cigarettes are sold in India. सिगरेट पीते हो कि नहीं का आंसर. Sir, cigarette तो नहीं पीता हूँ. But again, they reiterated the question. To be very honest, so I was like नहीं पीते. सिगरेट नहीं पीते हैं. Then how would you sell cigarettes? इंडिया में कितने cigarettes sold होते हैं annually? So again, we are very lucky कि guesstimates का paper होता है हमारा. So it clicked at the right moment time. Demand supply analysis. इनका ना गेस्टिमेट्स का पेपर होता है जो स्ट्रेटजी के प्रोफेसर है अनिल सर, वो पढ़ाते हैं. Whatever was told and you guys discuss the same thing in the class. Right, sir. We वो discussed. काम भी आता है, वो नौकरी निकालने के. तो क्लास में सुन लेना जब तुम किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करोगे. बहुत बढ़िया. हाँ जी. And what's your name again? Shubham Prakash. शुभम प्रकाश. Yes. Hello, sir. I am Nitya Ahuja. I am a student of PGDM core and I am placed with BMW as a brand communication intern. Fancy, very fancy. Good. How about you? So my name is Harshit Badgamia. I have been placed at JP Morgan for operations analyst. बड़े लोग, बड़ी बातें. कहाँ बॉम्बे आ रहा है तू? Yes, sir. बहुत ही बढ़िया. And the summer stipend कितना बता दे आज? So 90 per month plus 50 relocation amount. 90. 230. 2.3 लाख. 2.3 lakh for 2 months. झूठ तो नहीं बोल रहा ना. जेपी मॉर्गन भाई ऊपर से बॉम्बे रिलोकेशन एक्सपेंस के साथ 2.3 लाख फॉर 2 months internship. Not bad. Great. Hi. Hello, my name is Palak Rustagi and I'm a first year student and my specializations are international business and marketing. And as of placements, the process is still going on and I've got multiple shortlists and I'm very specific about the role I'm going to do. So I'm in the pipeline. The process. बहुत ही is बढ़िया. in the शॉर्टलिस्ट है ना, pipeline. बस बाकी Yeah, सब सही I है. have got. ये बढ़िया बात है. गुड यार. शॉर्टलिस्ट वगैरह तुम्हारी दूर की बात है, पहले इनका इंटरव्यू क्रैक करवाना है. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस? वाज इट नाइस? वाज इट 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? और आप कौन से कोर्स के हो? International आईबी business. के. Yeah. आप हो Big data एनालिटिक्स के. तुम हो कोर के. तुम हो कोर के. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे एक और एफएम वाला मिसिंग है, वो ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा था. तो मुझे कमेंट कर रहे थे तुम्हारी कौन सी कॉल आई है. आई थिंक अम्ब्रेला वो रहता है ना, एडमिशंस, राइट? सारी कॉल्स इकट्ठे हैं, देन यू असाइन अकॉर्डिंगली. Scaled score is there. स्कोर के ऊपर बना के एंड देन When the offer letters are sent out for the interview process, तो अगर तुम कोर के लिए selected होते हो तो you get PGDM. You are selected for PGDM. If you are someone who is shortlisted for a specific course, like I was shortlisted for FM and IB. So in the interview, I was asked what are yours, interests. So I mentioned IB. That is why I got shortlisted in the IB program. अंडरस्टूड. तो शॉर्टलिस्ट पे पहले ही पता चल जाएगा आईबी का, एफएम का और Yes, जाके. yes. बढ़िया. पहले भाई तुम बताओ तेरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? Sir, my interview process, it was very exciting. Firstly, क्योंकि काफ़ी detail process हुआ था. It was around 15 minutes of interview. It was mostly resume based, my interest. So I am from Ranchi. I am from same school from which MS Dhoni belong to. So एक point वो भी चला गया था कि कैसा रहता है experience, क्या क्या चीज़ें रहती हैं. What is special about Ranchi? Course क्यों करना है MBA? जो general questions होते हैं why MBA.
सो इस मैनर में मूव किया था. Very good. Very. How about you? So, sir, my interview was also a 15-minute interview, and it revolved around my resume because I am not a fresher, so I come with work experience in market research. कितना work So, 1.5 years. Good. So, it was majorly revolving around market research, the companies I have worked with previously in market research. So, उसी के around था और थोड़े बहुत behavioral questions थे. Why MBA? और because I come from a journalism background, so why MBA was a focus. कि journalism से marketing shift कर लिया, आप MBA कर रहे हो. So, some kind of a diversity was there. Yes. Which is good. Which is good. Great. Yeah. Yes, sir. So my interview was mostly technical. So I'm a fresher and I've done graduation in business analytics specialization. So they were focused on my conceptual questions. Since I was looking for big data analytics. So they were asking me all questions about analytics, So you applied statistics. to analytics only starting में कि तूने core में apply किया? I applied for core, FM, and BDA, but my first specialization, my first preference was big data analytics. only. Which is working out good for you, huh? Working out good. Great. So they wanted to make sure that I'm having that consistency. So they asked me all about statistics, regression. They also had some general questions that where do you see yourself in 5 years, but mostly technical. बहुत good. How about you? My interview was also for 15 minutes since I come from an engineering background and I have work experience in the same field, Which college did you go to in general? JP University in Solan, Himachal Pradesh. वो तो बहुत ही Yeah, fun university है ना? yeah, मतलब it has 2 branches in Noida as well. अच्छा ना. So I was from the Solan, Himachal Pradesh one. सोनमर्ग में ज़्यादा fun है ना? मतलब it's Himachal. So it's बाकी 30. बातें हम बाद में करेंगे. Yeah, 30 minutes away from Shimla. So I feel that. I feel the so university you on the can- way. I think it comes. in when you come Bagnagar. down You to can Shimla. see from the when you're traveling to Shimla. Yeah, know, it's a beautiful place. Beautiful place. Good time. Yeah, amazing time. Good So is they asked you about your work experience. work. Majorly 90% it was on my work experience. What did I do? What was my role? How I handled my role? And also since I came from a different background, so it also revolved around why MBA. Since BTech is also a good scope. You worked as software developer. It's a very good. It has a very good scope. So why did you choose MBA? So तो it अभी was तक लग why रहा है कि MBA. एक क्वेश्चन why MBA is consistent Yeah. throughout, right? बोर्ड के अंदर. तो तुम भी कमेंट करके बताना मुझे कि भाई why MBA क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है कि नहीं अभी And तक. tell me about yourself. And That tell me is, something. yeah. It's like a standard. Tell me about yourself. What is not in your resume? Also, lovely. it was also a question. Yeah. So it's like lazy interviews question. So when I was on a panel of one of the top business schools in the country, so पहला क्वेश्चन होता है अपने बारे में बताओ यार. हम बैठे हैं तुम कुछ तो बताओ. Rather than we figuring it out. Though we've got entire forms and everything, and also it's like an icebreaker, and you feel comfortable when you start talking about yourself. That is the point where you can take the conversation in a way where you want to. True that. तो मतलब what we believe कि तुम्हें अपना introduction in a way you should give that आगे questions will be based on your introduction. True. Drive the interview this Yes, way, right? exactly. Good, बढ़िया. थोड़ा 4 के बारे में बताओ. Why 4 भी तो पूछते हैं यार. Right? ठीक है, average placement ये तो नहीं बोल सकते. Why 4 because यहाँ पे average salary 15 लाख चल रही है, median 16 लाख चल रही है और median 15 लाख चल रहा है. 132 companies that are coming on campus. That's all good. But 4 के बारे में कुछ नई चीजें कुछ बढ़िया. एक तो you guys can talk about your dream company, like for example टेक महिंद्रा, ITC वाला यहाँ बैठा हुआ है, they're coming on campus, JP Morgan वाला यहाँ बैठा हुआ है, BMW वाली यहाँ बैठी हुई है. You can also talk about the companies, not because you want to get placed in the company, because your goals are aligned, yeah. to these companies. अगर तुम्हारे वो रहता है तो बहुत बढ़िया. और बताओ 4 के बारे में स्पेसिफिक क्या है? There's an international immersion program we offer. It is mandatory for the first year students. Okay. So it is basically you choose your one program which you want to go and study in another country, in another university. Okay. And the all cost of that your travel accommodation is on the college only. It's included in your fees. So apart from the academics, you can imagine you are going with your batchmate, you are going with your friends to another country and staying there for 1 week. So you have a classes scheduled for मतलब around 2 to 3 hours in a day. उसके बाद you have your time, you have free time to roam around the country. So I think it's a USP which clicked for me that yes, I'm going to have this. So this is one of the things. When Yes. they're confused, yeah, industrial immersion. But apart from the fun side of it, you should not talk about fun, of course. They have a lot of fun. तू गया था कि नहीं last सर गया था. I went to Singapore. Singapore. मैं फर्स्ट ईयर में जाने वाली Yeah, सर to go. अभी जून में जाएंगे. मस्ती धमाल होता होगा ना? सबसे अच्छी बात यह है that we have been affiliated with तू अभी top गई भी नहीं है, universities. सबसे अच्छी बात है. Before coming to the campus, when you study about 4, so we have been affiliated with many universities and some top universities like Nanyang Technological University is there, NUS. NUS is there, ESSEC Business School is ESSEC, there. yeah. Which is good. So that could be a USP again, which you guys notes ले लो भाई जो इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, ये काफी हेल्पफुल होगा. बहुत बढ़िया. और कुछ बताओ यार बढ़िया.
हाँ भाई So I was तू बोल यार जेपी मॉर्गन वाला नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे यार हाँ I was mostly attracted by the analytics curriculum that is taught here. फील्ड पकड़ो तुम अगर आईबी के लिए जा रहे हो तो रीड सो मच अबाउट आईबी व्हाट आईबी इज ऑल अबाउट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग सब्जेक्ट देन कोर देन आईबी दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट So it clicked with my interest, that learning about Python, databases, Yeah. how to apply business problems on it. So it was so much fun and so much interesting for me that it just clicked that this is the right बहुत बढ़िया curriculum. कुछ इंटरव्यू में कुछ वियर्ड बात हुई थी तुम्हारे जब तुम कुछ मतलब एक चिली था मतलब बहुत It chill, was मतलब like a conversation, yeah. what is it like a conversation Yes, it was like a More of a conversation. For me specifically, sir, what again, as we have discussed, कि interview कैसे होता है, it is a twofold aspect. Firstly, data part, academics, इन सब पे बात होती है. For me, it was more of a personalized kind of an interview. For example, panel ने पूछा था, if we come to Ranchi, आप हमें कहाँ लेकर के जाओगे? अच्छा So मैंने उसमें जगह बताने लग गया मैं कि these are the places. तो उन्होंने बोला कि क्यों आप अपने घर नहीं ले जाओगे? Hosting अतिथि देवो भव concept. So it was highly engaging in that sort of sense. नाइस रांची में पहाड़ वहाड़ है ना हाँ, ये जगह है ना हाँ मतलब सुना है मैंने Plateau region के बीच में तो पहाड़ का I guess. got to know पहाड़ वहाड़ है in range also is very beautiful Yes, sir. Patratu Valley I've is not been there but yeah good यार good हाँ कुछ So और a general question which they ask, जैसे I come from Muzaffarnagar, so they asked me what is special about Muzaffarnagar, apart from the thing they know, which was कि it is basically Asia का sugar belt में आता है Muzaffarnagar, so उसके अलावा कुछ और बताओ. तो वो माफिया भी है ना शुगर माफिया ओके गुड हाँ ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे पता लगा हमारा चैनल बैन हो गया हाँ To make it was unique that they didn't even ask me about my introduction. Okay, good. So there were very less generic questions. They were just focused about me that what do you know, that what value and what knowledge do you bring here while you are while you want to join. बहुत बढ़िया देखो भाई इनके इनपुट्स प्लीज ले लीजिए तुम स्टेप 1 सोच रहे हो भाई इंटरव्यू का स्टेप नंबर 2 होता है नौकरी भी क्रैक कर रहा है राइट एंड मोस्ट ऑफ दीस गाइस आर ऑलरेडी थ्रू इन द बेस्ट कंपनी व्हेन यू जॉइन एनी बिजनेस स्कूल ड्रीम होता है अच्छी प्लेसमेंट बिकॉज इट्स द आउटकम व्हाट यू लुकिंग एट राइट तो इसलिए इनके इनपुट्स देख लेना बिकॉज it is tried and tested in the interview and tried and tested later on as well, which is really helpful. Great, yaar. Shubham, हाँ भाई कुछ और So one of out of the box question which I had was कि they asked for my what was your role, but the catch was you have a 5-year-old child in front of you. You have to explain your role to that child because you cannot just throw technical terms to that person. So I had to explain my whole role, my whole 2.5 years in a very, very, very basic and layman language to them. So that is what I believe was a tricky part of my interview. That's a good one. और कुछ Sir, again, what I can recall from one of my question. So the panel asked me why not 4. So this was a very tricky question at that point of time. But again, I may. ये बढ़िया क्वेश्चन है तुम मुझे बताओगे why not 4 अभी 2 साल पढ़ने के बाद और 1 साल पढ़ने के बाद अच्छी सी नौकरी करने के बाद हाँ, अगर तुम्हें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा why not 4 क्या आंसर किया तूने तुम भी अपने आंसर रेडी रखो हाँ Sir, for me it was like कि, I don't see it as a question that why not 4 with a question mark. Rather it as a statement why not 4 with an exclamation mark. Yo, I my don't brother. see any reason that I'm I so should not. cool. Okay, good. I don't see any reason. I don't see any reason. सामने वाले खुश हो गए कौन ले रहे थे इंटरव्यू तेरा Sir, one of the panel member was Anil sir. Anil itself. sir, So I was very lucky Anil with sir that. is the head of strategy. He's a dear friend. He also takes care of admissions. And this guy is such an amazing professor. Second year में इनकी क्लास होती है elective की. Right, sir. Full होती है 3 class. It's one of the most chosen electives Yes, sir. at 4. Yeah. Most It's a demanded. crazy class. बहुत ही बढ़िया. All right, I know you're a busy guy. I'm going to get out from here. So one parting thought for all my kids who are listening to. देखो भाई अभी तुम बड़े आदमी बन गए हो. Now you're on this side of the yellow sheets. Remember? Yeah. Now you're Right, this sir. side, है ना? अभी तुम इस side हो. And now you're role models. Yes, sir. Imagine you're listening to somebody who's placed in ITC or a JP Morgan or got a couple of shortlist and he's sitting inside after cracking business school. तो वो रह के अभी स्टूडेंट को मोटिवेट करो और उनको लास्ट पार्टिंग थॉट दो जो इंटरव्यू दे रहे हैं अभी मैं अगर कुछ बोलना है तो सर की मोटिवेशन वीडियो सुनो दैट हेल्प्स अ लॉट एक्चुअली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आल्सो एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर से एनी कंपनी इंटरव्यू आल्सो सो सर हमें आते हैं हर रोज आपके लिए एक नया मोटिवेशन लेकर तो वो सुनो एंड इट एक्चुअली हेल्प्स Yeah, on a very honest and serious note, when I had my shortlist for the interview that I have for 4, मेरा first interview था, so I was very nervous that what to do, how are the interviews. So I went through your channel, उसमें we have extemporary round and personal interview round. So I was very nervous about the extemporary round. So उसमें I looked at your videos, उसमें आपने topics भी reveal कर रखे थे, तो on a very serious note, it helped me very much. It helped me a lot too, sir. When I was preparing, I was तू very ज्यादा nervous. बोलेगा तो ये प्रॉब्लम है हाँ बहुत I was very nervous at how do I approach my exam preparation, how do I approach my interview preparation. So I found that I feel that I'm weak in GK, sir, but looking at your videos and looking at the motivation, I pushed through it. I prepared very hard and then
with my results. This is what gives me motivation to work more hard. भाई. सर मोर स्पेसिफिकली फॉर मी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है क्योंकि 4 की वीडियो आपके चैनल पर ही मैंने देख करके अप्लाई करा था क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है ऑल्सो मैंने मॉक्स भी काटकिंग के लिए तो वो बहुत हेल्पफुल था ऑल दो इफ दीज गाइज आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू में अगेन जैसा आपने बोला येलो पेजेस से इस साइड आने की जर्नी है वो इंडीड वो जर्नी रही है सर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आप बता जाते हो जो बहुत इंपैक्टफुल रहती है और उस पॉइंट पे क्लिक करती है इंटरव्यू के लिए सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर अस ग्रेट भाई तो भाई फटाफट अपनी निकालो ये इंटर्नशिप सॉरी इंटरव्यू क्रैक करो उसका बेस्ट इंटर्नशिप निकालनी है उसका अपन प्लेज इनको तुम्हें दोबारा बुलाएंगे एंड टेल देम लाइक हाउ टू क्रैक गुड इंटर्नशिप ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन डू इट द लाइक बटन को क्या बोलते हैं लाइक शेयर Like, share, and subscribe. दो बार बोल दिया अभी तो कर Hit the bell icon. Hit the bell icon. हिट द बेल अभी तो ये कुछ लोग जाने वाले अभी तो आई अनसब्सक्राइब करने का टाइम है बट नहीं, सर वो नहीं होता वो नहीं होता मैं 2 साल हो गया अब तक सब्सक्राइब Yeah, we're still here. We're sitting here with you, so All right, this is so amazing, boys and girls. So yeah, drop in a comment. Have you guys applied before? How was the interview experience? Round 1 में कैसा हुआ? या कब आपका interview आने वाला है? Date type करिए. And can you also check and tell them how they fared in the interview? Looking at the transcript, अगर ये type करेंगे comment section के अंदर. yeah, sure. कमेंट करिए आपको ऑलरेडी हम फीडबैक देना शुरू करेंगे और जो लोग देने के लिए जा रहे हो अपना डेट टाइप करना भाई कब तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कब तुम्हारा इंटरव्यू का डेट है थैंक यू फॉर जॉइनिंग टेक केयर hit the like button. Thank you so much. Take care. Bye.